अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। Hello, welcome everyone. Welcome to a new video of Introduction to Internet of Things. आज हम देने वाले हैं वीक 4 असाइनमेंट 4 का सोल्यूशन आंसर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स वीक 4 लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट है 1 सितंबर 1 सितंबर लास्ट डेट। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Choose the appropriate answer about the parameter that the sensor detect. Option है passive infrared, detect objects ultrasonic distance, passive infrared distance, ultrasonic detect object, passive infrared color, ultrasonic sound, detect sound, passive infrared detect sound, ultrasonic। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी कर लो। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जूम आउट कर देता हूँ। A typical wireless multimedia sensor network deployments. What is the relation between the number of camera and scalar sensors? ये ऑप्शन है is less than equal to C, is greater than equal to C, is equal to C and none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, what is which of the following represents nanoscale? ऑप्शन है 10 to the power 12, 10 to the power minus 12, 10 to the power 9, 10 to the power minus 9। ऑप्शन सी है आपका 10 to the power minus 9। ऑप्शन डी 10 to the power 10, 10 to the power 9। ऑप्शन डी 10 to the power 9। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। In molecular communications, what works as mediator between cells and vesicles? Question number 4। Question number 4 ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस, गैप जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, typically what frequency range do the nodes in a nano network operate communicate? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 and the answer is option number A. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following relations is necessary for establishing the coverage implies connectivity? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, transmission range is greater than equal to 2 into sensing range. Next, move question number 7. In sensors networks, how many types of reporting exist? In sensor networks, how many types of reporting exist? ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4. तो आंसर is option number C. Question number 7 answer is option number C. Question number 7 answer is option number C. Next. Question number 8. Fill in the blanks. Coverage algorithms are centralized, dash decentralized, dash localized. Answer is coverage algorithms are centralized or decentralized and localized. Question number 8. Question number 8 answer is option number C. Or and option number C. Centralized or decentralized and localized. Question number 8. Next. जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी। Question number 9. True or false? Main objective of coverage in networking is to increase the lifetime of the network with maximum number of sensor nodes in area. True or false? और ये क्वेश्चन नंबर 9 फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फॉल्स है। फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 फॉल्स होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10. In the given diagram, if the nodes have the same sensing range Rs, what is the distance between them in case optimal coverage? ये डायग्राम है और क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है √3 Rs. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ये आंसर है √3 Rs. जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. Question number 11. True or false? Sensor nodes are capable of collaborating with one another. True or false? Sensor nodes are capable of collaborating with one another. True or false? और ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू है। जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12. What device is responsible for
collecting data from the sensor nodes and deliver it to sync nodes. Option है sensor nodes, user devices, data modules, relays. आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in UAV network what topology requires one node from each group to connect to the ground base station? Option है star, multi star, hybrid star, hierarchical star, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी जल्दी नोट कर लो, 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, in UAV network the topology supports multi-point to multi-point communication, bus, star, ring, mesh. Question number 14 answer is, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देख लिया मैंने लिख के रखा है सारा कुछ, ऐसा मत समझना कि मैं गेस कर रहा हूँ या फिर कुछ। सारे आंसर मैंने साइड में लिख के रखा है, पहले ही निकाल लिए थे, अभी तो निकालने जाऊंगा तो टाइम लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑप्शन डी, मेस। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है और आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, दूसरों की भी मदद कर देना। थोड़ी गलती तो हो जाती है ना, हर चीज़ तो सही नहीं हो सकता। तो अगर कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है तो बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। Question number 15, true or false? M2M is a peer-to-peer networking paradigm and does not support cross-platform communication. True or false? Question number 15, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है फॉल्स, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन number 15, M2M is a peer-to-peer networking paradigm and does not support cross-platform communication. Option number B. Let's submit answers. और ये सबमिट हो गया। Thank you for taking the quick for assignment 4. Thank you for watching, guys.